method, the preparations of benzoic acid पढ़ौती और aryl acid चारिटा मेथड प्रीवियस क्लास रे पढ़ेबी। फिफ्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिफ्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन होची बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ benzoyl-trichloride, benzoyl-trichloride, benzoyl-trichloride. The benzoyl-trichloride को हमें alkaline hydrolysis करें। It is treated with aqueous NaOH or KOH. First, it's an unstable product. जो तीनटा क्लोरीन होती तीनटा OH ग्रुप लागे वो पूरा अनस्टेबल प्रोडक्ट फॉर्मेशन करे, ताको हीट कर देले डिहाइड्रेशन करके बेंजोइक एसिड पाए। And there is when benzoyl-trichloride is on alkaline hydrolysis, that is treated with aqueous NaOH or KOH. First, form an unstable product. Unstable product formation, then a dehydration takes place. Dehydration takes place to produce benzoic acid. पहले रिएक्शन देखो, ये this one is benzoyl-trichloride. It is CCl3. देखो कहा जाए कौन के benzoyl-trichloride. एको में ट्रीट करीबा उन्हें aqueous alkali suppose KOH potassium hydroxide aqueous इनको alkaline hydrolysis ये 3 multiply ये तीनटा हाइड्रोजन को ये होते तीनटा OH substitution करो sites and substitution पहले अनस्टेबल प्रोडक्ट फॉर्मेशन करे एटा होची सी तीनटा क्लोरीन बदले तीनटा न्यूक्लियोफाइल OH माइनस आइ लागुचे एटा होची सिंगल बॉन्ड OH एटी OH एने एक माइनस केते रे 3KCl same carbon ring with more than one OH group there is unstable. And ये होता है unstable product. Then dehydration takes place. There is minus water. The OH is to eliminate OH. Then we keep the product. Around COO benzoic acid. Fifth method of preparation of benzoic acid.
नेक्स्ट आ गोटे प्रिपरेशंस पढ़िबार by oxidations of benzyl alcohol. Oxidations of 6 to 1. Benzyl alcohol. The benzyl alcohol को oxidation करा जाए in presence of the oxidizing agent acidified potassium dichromate or acidified K-mannose process benzoic acid. In presence of the oxidizing agent get to Cr2 or 7 plus or acidified K-mannose or potassium permanganate. Benzyl alcohol is oxidized into benzoic acid. Benzyl alcohol is oxidized into benzoic acid in presence of the oxidizing agent acidified potassium dichromate or K-mannose. ताले रिएक्शन ये बेंजाइल अल्कोहल CH2OH बेंजाइल अल्कोहल with an oxidation K-mannose H plus और K2Cr2 plus ये जो 1 डिग्री है ये फर्स्ट अल्डिहाइड है फर्दर ऑक्सीडाइज टू तो मैं डायरेक्ट एसिड ओके ताले ये डायरेक्ट फॉर्म कर दो C++ वाटर फॉर्मेशन अब ये होची बेंजोइक की कॉन्टिनेंट this is all about the preparations of benzoic acid. Here are the chemical properties. ताले chemical properties रे aliphatic रो acidity बढ़ेगी, aromatic रो acidic nature to explain. Acidic nature of benzoic acid. Benzoic acid is stronger than from aliphatic acid, but weaker from formic acid. Only formic acid to a weak, but out so the aliphatic acid to a strong. That is benzoic acid is stronger than acetic acid. That is why here come details explain. बुझिलो ताले chemical properties acidic nature
acidic nature of benzoic acid or acidity of benzoic acid को explain मैं जाने जो एसिड रिएक्ट प्रोटॉन डोनर जेते फास्ट गोटे प्रोटॉन को डोनेट करि पारो दैट विल बी स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू अदर ताले यार में एसिडिक नेचर को केते एक्सप्लेन तला बेंजोइक एसिड is stronger than aliphatic acid, but only weaker from formic acid. ताले एटी वो कहली दे लाइक ये फॉर्मिक एसिड HC डबल बॉन्ड OH फॉर्मिक stronger than benzoic acid C double bond stronger than, for example, R related or C double bond acetic acid. एटा important indicate को short question पड़े आप आजाद करके देखियो तो वेरे decreasing order of acidity of this compounds बुझियो एटा होचे decreasing order formic acid is stronger than benzoic acid than any carboxylic aliphatic acid ताले यार रीजन कर एक्सप्लेन करिबा ए दुई जनकर मेनली कंपैरिजन पड़े 2 मार्क्स 3 मार्क्स क्वेश्चन पड़े 3 मार्क्स compare the acidity between benzoic acid and acetic acid ताले यार हमें एक्सप्लेन करिबा रीजन रे फर्स्ट पॉइंट कहले सुने ये होचंती बेंजोइक एसिड में C डबल बॉन्ड ये माने करो नेगले R C डबल बॉन्ड केते के हला ताले ए जो कार्बोक्सिल ग्रुप ता जो कार्बन में लागी छे एरोमेटिक रिंग रे ए दिस कार्बन इज व्हाट टाइप ऑफ हाइड्राइड sp2 हाइड्राइड बट ये जो अल्किल संगे लागी छे कार्बन को टाइप हाइड्राइड sp3 राचार बड़े चारिटा सिग्मा 1 2 3 4 sp2 hybridized this one is more electron negativity because of which greater s character as compared to this one ताले जो benzoic acid रो ये जो aryl group और benzene ring causes minus ion which withdraws electron so it's connecting point then 8 that on करिवो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करिवो कनेक्टिंग बॉन्ड ताकि कि नहीं aryl ग्रुप का कदे माइनस साइड है ताले ये कौन पर किंतु तुम्हें जाने छी प्लस साइड है
শুনো মন দেখি এটা হচ্ছে প্লাস আই ফ্যাক্টরিয়াল কিন্তু এই আরএল গ্রুপ না রে এইটা আরএল গ্রুপ ये causes minus sign effect negative inductivity তাহলে যেহেতু এই আরএল গ্রুপটা হচ্ছে C6H5 creates minus sign effect ये withdraw करियो connecting bond इलेक्ट्रॉन তাহলে এই টু ইলেকট্রন উইথড্র করে তাহলে এই তো সিঙ্গেল বন্ড আছে ইলেকট্রন উইথড্র তাহলে the hydrogen atom can so easily release the effective proton as compared to aliphatic acid and the alkyl group pushes electron towards connecting bond তাহলে এটি ইলেকট্রন ইয়াকে কালিও হাইড্রোজেন সহজে যাই পারে ওটা বুঝে লাগো The benzoic acid is stronger than aliphatic acid. বুঝলি? তাহলে এই মলিকিউলি একটু সব দিয়ে নোট করো মানে পরে বুঝতে পারিব নাই ক্লাস 6 আরএল গ্রুপ means what is it? ये जो C6H5 सिंगल बॉन्ड causes negative inductive effect minus I effect तो मैं inductive effect तो जानिए छो it creates by it exerts negative inductive effect so that withdraws electron towards connecting bond বুঝি পার and a proton release desired as compared to aliphatic acid where the alkyl groups creates quantity of minus I sorry plus I since the alkyl group causes negative inductive effect which withdraws electron for its connecting a bond so release of a proton H plus is a release of proton is as compared to aliphatic acid where due to plus I effect caused by alkyl radical বুঝি পারো তাহলে এইটি মু কইলি 10 benzoic acid is stronger than aliphatic acid but second reason I will padiba important তাহলে আমি এই যে benzoic acid ଆଉ acetic acid और aliphatic acid ର acidity को comparison करि परिबा according to the stability of their conjugate bases তাহলে এই মানকৰ conjugate base তো তুমি জানিছো previous class रे भी कहली যেতବେଳେ acid H+ ion को loss କରି दिए rest part को कहा जाए conjugate base when an acid lost a proton the remaining part is called a conjugate base
এই যে দুইটা অ্যাসিড এর একটা এলিফ্যাটিক র কনজুগেট বেস র স্টেবিলিটি কু নেই কি ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନ୍ କରିପାରିବା which one is stronger acid ବୁଝିଲ ତାର ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ରିଜିନ କରିବା ତାହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ରିଜିନ ରେ କହିବି ଦେଖ relatively also the relative acid strain of benzoic acid and acetic acid particular नहीं होची बुझिलो and aliphatic acid bracket रे लाइक कहबे CH3 COOH यानी यहाँ संगे कंपैरिजन करे सब aliphatic acid the relative acid strain of benzoic acid and aliphatic acid can be compared as per the stability but as per the relative stability of their conjugate bases बुझिपा the relative acid strength of benzoic acid and aliphatic acid में relative strength measure comparison करिबा as per the relative stability of say दुई जनकर conjugate bases which can be explained by resonance what is na resonance साजरा में explain करें जो conjugate base जेते stable हबो माने benzoate और कार्बोक्सिलेट जेते स्टेबल हबो ताले एसिडिटी सेते अधिक हबो काने से क्विक प्रोटॉन को डोनेट करी स्टेबल हबो ताले वर्तमान में कहिबा एमाने तो रेजोनेंस सादर एक्सप्लेन करिबा why benzoic acid is stronger than acetic acid or aliphatic carboxylic acid सहज देखो तुम्हें एसिटिक एसिड नहीं पाई मार नहीं की बोल एना दिस वन इज RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH ये जेतले ए बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन को शिफ्ट कर हाइड्रोजन एटम रिलीज से गला H+ है that's why it is acidic the rate formation kala RC double bond O single bond O dot what kire minus plus H aliphatic acid ये aliphatic acid एटा होचे तार conjugate base when an acid lost a proton the rest part of the acid is known as its conjugate base
তাহলে এইটু কনজুগেট বেস ফরমেশন হলা কার্বক্সিলেট আয়ন এটাকে কহা যায় কার্বক্সিলেট কোন রে आयन ये कार्बोक्सिलेट आयन रो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ डबल हेडेड एरोमार बुझी पाइल ताले जेतेबेले एई कोन करिवो पाइबोन या शिफ्ट करि गला ये या क्लियर তাহলে ফরমেশন ক্লাস সিঙ্গেল বন্ড সি সিঙ্গেল বন্ড ডট 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 কেতে করে মাইনাস এটি কি বড় হবে ডবল বন্ড হয়ে গেল বুঝি পারে ये होची स्ट्रक्चर 1 फॉर्मेशन ये स्ट्रक्चर कौन है 2 आउ दबो के आउ दबो केतेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देला दुईटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ताले ये एत्ती ध्यान दियो दुईटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दोस नेगेटिव चार्ज इज डिस्पर्सन ऑफ बोथ द नेगेटिव ये ऑक्सीजन नेगेटिव था ये ऑक्सीजन नेगेटिव था क्रिएट ताले हमें बेंजोइक एसिड और बेंजोइक एसिड नोट करो ताले बेंजोइक एसिड रो alternate double bond here C double bond OH पहले 8 सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट करा हाइड्रोजन रिलीज रहेगा H प्लस पहले 8 के मुंह तोड़े माइनस H प्लस इलेक्ट्रॉन ओके ताले एटी कोन फॉर्मेशन हला रे एटी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ डॉट 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 माइनस ये दिला बेंजोइक एसिड ये होची बेंजोएट आयन कोन रे बेंजोएट এটা কো কহা যায় সে এসিড র কোন কনজুগেট বেস তাহলে কনজুগেট বেসটা হচ্ছে রেজোন্যান্স স্টেবিলাইজড বাই দা কন্ট্রিবিউটিং স্ট্রাকচার দেখ ये वर्तमान কোন রেজোনেটিং স্ট্রাকচার রয়েছে जेतेबेले ये या को शिफ्ट हे जीवो ताले ये या क्लियर ताले तुमे गोटे स्ट्रक्चर पाई गलो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गुडा सब हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स नहीं कि रे एटा होची सी सिंगल बॉन्ड माइनस डबल बॉन्ड it is double bond बुझी पारे और another structure केमती तो ये जेते बेले ए जो शिफ्ट हे जो तार आर्ट डिफिशिएंसी तले ए पाई बॉन्ड आसी कि या संगे कॉन्जुगेशन ताले another structure asla एडी डबल बॉन्ड पेयर करेगा C O माइनस और के
চার্জ হবো পজিটিভ চার্জ ডবল বন্ড বুঝলা पुढे अगेन रेजोनेंस स्ट्रक्चर करून दबोदे याकू न्यूट्रलाइज करिया में एक पाई बनासी की या संग्रह कंजुगेशन बुझी ताले एनदर स्ट्रक्चर ହେଲା एटाକୁ एक्सप्लेनेशन निहाती रेजोनेंस स्ट्रक्चर तुमको एग्जाम में करिया ପାଇଁ नले मार्क्स मिलबो 3 मार्क्स क्वेश्चन कौन किरे माइनस एटी एला डबल बॉन्ड एटी की चार्ज रे पॉजिटिव चार्ज एटी पहले आउली यूज करे स्ट्रक्चर दबो बुझिलो ताले एक को न्यूट्रलाइज करिया पाई ए पाई बनासी ए बॉन्ड संगे कंजुगेशन करे ताले another structure formation है a double bond C minus बुझिता लो a double bond ये कौन चार्ज है ये C resonating structures of benzoate. Because this one is ये होची structure 1, 2, 4 तेले fifth resonating structure. देखो benzoate ion case रे it will be negative charge resides on both the oxygen atom. Carboxylate ion may be negative charge reside करutla rise करutla on both the oxygen atom. But carboxylate ion only exhibits two resonating structure. केवल दुईटा resonating structure but ये more number of resonating structure तो जो benzoate એટલે જે જેતે એક્સેસ રેઝોનન્સ સ્ટ્રક્ચર દબો સેતે રેઝોનાન્સ સ્ટેબિલાઇઝ્ડ સેતે મોર રેઝોનાન્સ સ્ટેબિલાઇઝ્ડ that's why benzoate ion is more resonance stabilized as compared to carboxylate ion. So benzoic acid has a strong tendency to release a donate a proton as compared to aliphatic acid because benzoate ion is more resonance stabilized than carboxylate ion. That's why benzoic acid is stronger. What are the बुझे लगे ताले हैं आगे कोणी जदी को हैं या कोणी गुरे एक स्ट्रक्चर আছে हां गुरे कोणी गुरे আছে का एक है सेंस ताले एडी जस्ट टिके लेख्या ପାଇଁ ପଡିବ language in both the cases negative charge resides on both oxygen atom both oxygen kon kere tale dui jon jakar mane benzoate ion and carboxylate ions tale equivalent resonating structures bujhilo pehla bond benzoate ion so more resonating structure more resonating structures
as compared to capital carboxylate iron তাহলে thus benzoate ion is more resonance stabilized বুঝি পারলো কখন এই benzoate ion টা হচ্ছে more resonance stabilized way. That's why benzoic acid has strong tendency to donate a proton, becomes stable benzoate as compared to carboxylic acid. Right? And thus benzoic ion is more resonance stabilized. And accordingly, benzoic acid is stronger than aliphatic acid. Ada buji parlo stronger than aliphatic acid or like to make koi paribo mainly acetic acid sangre comparison pade. Buji no? But most stronger than that is acetic. Suppose कहिबी जो benzoic acid रे अर्थ मेटाल para condition रे यदि इलेक्ट्रॉन withdrawing group substitution है ताले से acidic character तार increase करेंगे यदि इलेक्ट्रॉन donating group link करेंगे बा connection होइछि substitution होछि acidity कम करे दो डिक्रीज तार गोटे दिले एग्जांपल खाली कहबी ताले ताले एटी गोटे पॉइंट करली if electron withdrawing groups are substituted in benzoic acid which increases the acidity. mana beta tale ko group oda acidity ko increase kare debe na gode lipo group na jodi halogen achi fluorine NO2 achi withdrawing electron jo mane withdraw kare seven acidic tend to top current increase ताले electron donating group decreases the acidity decreases the content acid lipo माने जो माने इलेक्ट्रॉन आर अल्किल रेडिकल जब सब्स्टिट्यूशन करे बुझिलो इलेक्ट्रॉन डोनेट करिवो रिलीज ताले आउ को माने इटा अल्किल रेडिकल जनरली इथाइल ए माने जदी लिंक करे चंते बेंजोइक एसिड सब्स्टिट्यूशन ऑफ समथि ताले
एसिडिक कैरेक्टर को से कौन करे डिक्रीज। सपोज गोटे एग्जांपल कहली एग्जांपल्स 1 example 1 definitely benzoic acid COOH তাহলে স্ট্যান্ডার্ড দে এইটি মনে করো COOH অর্থ পজিশনে বিক্রিল রেডিকাল লাগে বুঝিবা তাহলে this one is benzoic acid but this one is orthotoluic acid कहा जाए कहा जाए orthotoluic ये न पढ़ी पारे ये जानी चांस पढ़ी गले है ना orthotoluic acid ताहले ये काहे कि वीक कही गला रे नहीं तो मिथाइल ग्रुप मिथिल रेडिकल इलेक्ट्रॉन डोनेट यदि डोनेट कला ताले ऑब्जेक्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ऐड में कुछ सब इंप्लांट करी गयो हाइड्रोजन सहज रे रिलीज करी पारे ना फोटो है मन रहला ताले ऑर्थोटोलुइक एसिड सपोज यदि এই ইলেকট্রন ডোনেটিং গ্রুপ রয়েছে পজিশন চেঞ্জ করে দিই ডিসটেন্স করে তাহলে তার অ্যাসিডিটি কম করিব আউরি ডিক্রিজ করে COOH সপোজ মেটারে মিথিল লাগিস এটা মেটাটলুইক অ্যাসিড বুঝি পারে তাহলে नेक्स्ट पाराटोलुइक एसिड COOH या CH3 ये पाराटोलुइक सपोज एग्जांपल 2 पर ये बेंजोइक एसिड संगे में कंपैरिजन करिबा बेंजोइक एसिड এই মানকু আমি ইনক্রিজিং অর্ডার আর ডিক্রিজিং অর্ডার পরীক্ষা করি এক্সপ্লানেশন করিব ইয়ে হচ্ছে অর্থোক্লোরোবেঞ্জোইক অ্যাসিড ये होचंती मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड ये होचंती कोन की रे पाराक्लोरोबेंजोइक ये ऑर्थोक्लोरोबेंजोइक जल्दी जदि आसे पारे शॉर्ट क्वेश्चन रे ये होची सॉरी दिस वन ओनली बेंजोइक एसिड ऑर्थोक्लोरोबेंजोइक एसिड ये मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड दिस वन इज पाराक्लोरोबेंजोइक एसिड बुझी पारलो तले को आमे कहिछि डिक्रीजिंग ऑर्डर ले और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ले हैला तले एको भितरु सबटो स्ट्रांग एसिड किया हो ऑर्थोक्लोरोबेंजोइक बुझिलो देन ये तापर जाई तले एई चीज वर्तमान में लेस देन गेटर तले लिखि परिबा नाही सपोज ये को मो कहली 1 हो कि नहीं एटा होछ माने करो स्ट्रक्चर ए का एटा बी ये सी ये जी ताला में डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी करबा ताले डिक्रीजिंग
हबरे B then C then D then कौन हबो बुझी पारी ये तो आगे बहुत कथा किंतु दरकार नहीं यदि पढ़ेली है ना बुझी ये पढ़ेली प्राय से ना जोड़ा प्रीवियसली पढ़ेली कंपैरिजन बेंजोइक एसिड इज मोस्ट इंपोर्टेंट है ना 3 मार्क्स क्वेश्चन है ना बर्तमान आना में रिएक्शन शुरू होगा है ना पहले रिएक्शन सब करेगा रिएक्शन से 2 नंबर दे देगा 1 नंबर एसिडिटी को दे ओके what a reaction with active metals or a reaction with metals benzoic acid reacts with active metals like sodium potassium ये मान सकते जेंटी एलिफेटिक रे पड़ेगी produces their respective metallic salt with evaluations of H2 gas. बुझी पा? रेडी कहली benzoic acid reacts with active metal to produce their respective metallic salt. है पहले एग्जाम्पल करेंगे दिस वन इज बेंजोइक एसिड COOH ताले what happens when it reacts with sodium metal potassium ये तो जाने चु बेसिक मेटल एसिड तले ये जो एसिड का हाइड्रोजन को से रिप्लेस करेगी सोडियम सॉल्ट को कन्वर्ट ताले gives rise to ये C डबल कौन किरे एने प्लस माइनस प्लस गोटे हाइड्रोजन से हाफ H2 गैस this one is sodium benzoate the potassium संगे फॉर्मेशन करेबो potassium benzoate the reaction with active metals like sodium potassium which produces it reacts with sodium produces sodium benzoate reacts with potassium benzoate second third reaction that is the reaction with sodium carbonate or sodium bicarbonate कौन करेगा माने करो NaHCO3 करेगा बुझिलो sodium bicarbonate पहले benzoic acid decomposes sodium bicarbonate produces कौन करेगा produces CO2 बुझिला the benzoic acid decomposes sodium bicarbonate और कार्बोनेट कंपाउंड को भी डिकम्पोज करेगी
ଗୋଟେ effervescent brisk effervescent करे the CO2 gas ହେଲା sodium bicarbonate to produce a simple तरीके to produce a CO2 gas बुझी पारे ताले reaction ये होती benzoic acid plus sodium bicarbonate ने यदि देखो एटा होती सोडियम कौन कहली बाइकार्बोनेट और यदि सोडियम कार्बोनेट भी देला तो सब के कॉमन प्रोडक्ट बा जो कार्बोनेट कंपाउंड और बाइकार्बोनेट कंपाउंड्स का ब्रेक करेगी रे इवॉल्व करे CO2 गैस पहले एक फॉर्मेशन कला COONA सोडियम बेंजोएट इस सोडियम बेंजोएट फॉर्मेशन ये एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव करी बेसिक मेटल का जाएगा ठीक है प्लस CO2 एडे दुईटा हाइड्रोजन प्रोडक्शन वाटा ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटे वाटा बुझी पालो के यदि सोडियम कार्बोनेट भी नहीं था तो Na2CO3 ये भी कॉमन प्रोडक्ट से सोडियम बेंजोएट CO2 एंड वाटर तो बैलेंस होगा मन रहेगा ये रिएक्शन हुई सोडियम बाइकार्बोनेट तुमको सपोज गोटे क्वेश्चन पढ़िला तुम्हें फिनॉल का पढ़ी सकते फिनॉल और एसिडिटी तुम्हें जानी चाहिए एसिडिक रिएक्शन बेंजोइक एसिड का भी जानी तो एसिड से कहबो गिव ए डिस्टिंक्शन टेस्ट बिटवीन बेंजोइक एसिड एंड फिनॉल और एसिडिक एसिड एंड फिनॉल बुझी पा ताले तुम्हें कौन लिखिबो इसी लिखिबो ताले तदे क्वेश्चन गोटे आसीबो एमती गिव ए distinction test between acetic acid और benzoic acid and phenol बुझिलु ताले acetic acid benzoic acid जेंटेसी फिनॉल भी सेते तला में डिस्टिंक्शन टेस्ट कहि पारिबा ये जो CH3COOH और C6H5COOH এটা কোন এসিটিক অ্যাসিড ये কোন বেঞ্জোইক can be decomposed sodium bicarbonate produces CO2 gas. The brisk effervescence को आ जाए अच्छा मैं सिंपल करके लेता हूँ CO2 gas but phenol does not respond. बुझिलु phenol has no effect towards sodium bicarbonate. See what distinction है? पहले तुम्हें
reaction लिखिदबो CH3COOH plus sodium bicarbonate NaCO3 which produces sodium acetate with evaluation of carbon dioxide and what into phenol added to OH phenol plus sodium bicarbonate NaCO3 added no effect buझी पारलु ये होचंती acetic and the distinction test 2 marks question আছে clear और যদি benzoic acid পড়লা benzoic acid reaction লিখে আবার বুঝি পারো সোডিয়াম এটা সোডিয়াম অ্যাসিটেট না সোডিয়াম অ্যাসিটেট ফর্মেশন और CO2 gas release करेगा loss कौन दे ना water समझ क्लियर ये कित नंबर है रिएक्शन 2 नंबर नहीं 3 नंबर 4 अरे भी पड़ी हाँ Identity tahu, di pada kalau acidic nature is most important. Di situ question asiba itu lah. Bas. Stop.